Hello, students. I am your English mentor, Sana ma'am, and I hope you are in the best of your mind, body, and spirit. Today, I am here to address a permanent query that is among the student community. How can we tackle the passages in IPMAT? So many students come to me with their woes and worries. They say, ma'am, हम बहुत reading करते हैं, at least they claim to, and we even practice passages. But once we start to write our mocks, especially IPMAT के, तब सब मोए मोए हो जाता है. So don't you worry. I am here to address your concern. I've come up with 5 amazing tried and tested tips for IPMAT RCs. So let's get started. The first one, and very important one. Be a big picture reader, neither a hunter nor a scholar. So what are these jargons like? Don't you worry. बिग पिक्चर रीडर वो होता है जो पैसेज का एक एरियल व्यू ले रहा होता है, राइट? एज अ पर्सन हु इज टेकिंग एग्जाम इन सच अ जिसको मैं कहती हूँ एकदम ही स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट में जहां पे बहुत कम समय में पैसेज सॉल्व करना है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी सेंटेंस विच इज रिटन देयर इन द पैसेज, एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट. दिस इज नॉट अ मेमोरी टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन. So you only have to understand the key points or the highlights of the passage. Try to understand the main idea and the crux of every paragraph. On the contrary, there are some students who act like scholars. They try to remember and retain every bit of information, which is not a practical thing to do because there's always a time crunch. While there are others who try to act very smart. And they are the hunters. वो क्या करते हैं? They don't read the entire passage, बल्कि वो सिर्फ आंसर ढूंढ रहे होते हैं. So हमको hunter भी नहीं बनना है, हमको scholar भी नहीं बनना. The most practical thing for us is be a big picture reader. The second tip, which is very, very important, practice chunking for faster and better reading. Now, maybe you're hearing about it for the first time. See, we're not supposed to read word by word. In fact, we should be reading word groups or in chunks. That is chunking. मतलब एक आपका जो eye span होता है ना, see, please understand that we actually read word pictures. तो एक eye span में 3 से 4 words and sometimes even 5 words can be accommodated. I'll give you an example. You'll be able to understand better. The cat is sitting under the table. Now, there can be somebody who reads it like this. The cat is sitting under the table. On the contrary, there can be some who make groups out of it. The cat is sitting under the table. There can be even experts who make larger chunks and they read like this. The cat is sitting under the table. So definitely you're not supposed to follow the first method. But इससे आपका comprehension कैसे improve होता है? सोचा है आपने? ऐसे होता है कि we actually have some sentence structures unconsciously in our mind. For example, under the table, तुम जल्दी से प्रोसेस कर लोगे. एक prepositional phrase है, cat is sitting. ऐसे similar structures आप already जानते हो. So reading like this will not only make you read faster but also better. चलिए, आपको और अच्छे से चीज समझाने के लिए मैंने passage रखा हुआ है यहाँ पे. I am not going to teach this entire thing to you or explain, but in fact I'll only demonstrate. These are some tentative chunks that I have made, right? For example, in the seminar, I teach about hunter-gatherers. I often ask my students whether they think life was better in the past or today. Read it like this. I am not interested in explaining the text. हम यहाँ पे passage solving अभी नहीं कर रहे हैं. But मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे chunks में जब आप पढ़ते हो, your eyes glide smoothly across the text, your reading doesn't get choppy, you understand better and you read much, much faster.
थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट लगेगा टू प्रैक्टिस चंकिंग, और अगर ये कर ली ना आपने तो विद इन नो टाइम आप देखोगे एक हफ्ते में यू विल सी परसेप्टेबल इंप्रूवमेंट इन योर रीडिंग. Let's move towards the next point. Pick the right reading strategy. तो देखिए, राइट रीडिंग स्ट्रैटेजी बोली है, मैंने जानबूझ के बेस्ट नहीं बोला क्योंकि बेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है, राइट? तो what is right for you may not be right for me. Fine, so we have got to understand our way of doing things. But उसके लिए आपको चीजें एक्सप्लोर करना होगी. There are many students who like reading the conventional or the traditional way. कि पहले एकदम इज्जत से कायदे से पूरा पैसेज पढ़ो और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस पे आओ और क्वेश्चन सॉल्व करो. बट ऐसा करने से आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है एंड इट्स नॉट स्ट्रैटेजिक. सो आई वुड लाइक टू रेकमेंड यू अनदर थिंग. ऑलराइट, ठीक है, पहले क्वेश्चंस पढ़ें एंड इससे भी ज्यादा एक एडवांस टेक्निक बता रही हूं, ट्राई करके देखो इफ इट वर्क्स फॉर यू, बिकॉज द बेस्ट पीपल एट आरसीज एंड द बेस्ट रीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. 10 से 15 सेकेंड दे जस्ट ब्राउज द पैसेज. सबसे पहले पैसेज की मान लीजिए हर पैरा की पहली सेंटेंस या फिर ओवरऑल रैंडम आपने पैसेज की तरफ बस एक इसको कहते हैं ना ब्राउज करके देख लिया रैंडमली फॉर जस्ट 10 सेकेंड्स. 10 से 15 सेकेंड में कुछ नहीं जाता. नाउ यू अंडरस्टैंड द थीम, थोड़ा तो आपको समझ में आ जाए पैसेज किस बारे में. नाउ यू कम टू द क्वेश्चंस. अब जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, क्वेश्चन स्टेम ही पढ़ना है, बस ऑप्शंस नहीं पढ़ना है, तुम्हें याद बेटर रह जाएगा. जब आप पैसेज के बारे में बिल्कुल क्लूलेस होते हो और डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो तो आपके दिमाग में वो फिट नहीं होता. बट नाउ दैट यू हैव गिवन एटलीस्ट अ 10 सेकेंड लुक टू द पैसेज, नाउ यू नो कि थोड़ा थोड़ा पता है कि पैसेज किस बारे में है. क्वेश्चंस पढ़ोगे, दिमाग में बैठ जाएंगे एंड देन यू विल प्रॉपरली रीड द पैसेज बट लाइक अ बिग पिक्चर रीडर एंड देन you will start solving the questions. कुछ places होंगी जहां पर आपको कुछ details हैं जो याद नहीं आ रही हैं या options बहुत close है. You can go back to the passage to check. Please understand, going back to the passage is not a sin. As long as you do it in a span of 5 to 6 minutes, it's all permissible. तो ये टेक्निक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अभी आपके पास में टाइम भी है, ठीक है, तो इसको यूज करिए एंड आई एम श्योर यू विल लव द रिजल्ट्स. फाइनली टिप 4, एलिमिनेशन मेथड. स्टूडेंट्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ सिलेक्टिंग द राइट आंसर, राइट? मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा, मुझे पहला ऑप्शन ही अच्छा लग गया, बस मैंने आंसर मार्क कर दिया और मैं आगे बढ़ गई. नेवर डू दैट. Go till the end. IPMAT is notorious for giving you very close choices. तो कोशिश ये करो कि सिर्फ एक सही आंसर को सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि हमको कोशिश करना है कि हम हर ऑप्शन को एलिमिनेट करें या रिजेक्ट करें. फाइनली जिस ऑप्शन को आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे वही होगा आपका फाइनल आंसर. ठीक है? सो दिस एलिमिनेशन एंश्योर्स that you are being very strict in evaluating the options, right? So you can eliminate any option which is factually wrong or which is out of scope or which you feel is presenting the idea in a twisted way, okay, or is contrary to what the passage is saying. And there are so many ways, so many parameters on which we eliminate options. मैं डिटेल में अपनी passage classes में आपको कराऊंगी. All right? As for now, elimination is the key. एंड या फाइनली अब आप बोलोगे मैम अभी तक तो सब चंगा था, ये क्या बोल दिया आपने कि रीड डाइवर्स मटीरियल. ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू द बेस्ट रीडर्स आर वाइडली रेड पीपल, एक्सटेंसिवली रेड पीपल. आप जितने भी टॉपर्स हैं आप उनसे बात करके देख लीजिए, उन्होंने बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग जॉनरास पे काम किया हुआ है. ठीक है, उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है. सब कुछ से मेरा मतलब ये नहीं है एवरीथिंग ऑन अर्थ. सब कुछ से मेरा मतलब है डिफरेंट डिसिप्लिन्स, डिफरेंट जॉनरास. ओके, they might have read anything and everything which comes their way. That is what adds more confidence to them, right? तो आप
जब वैरायटी पढ़ोगे और ऑन अ रेगुलर बेसिस पढ़ोगे, व्हेन you'll read every day, that is when you'll be very comfortable with passages. कोई भी टाइप का पैसेज आ जाएगा, आपसे बनेगा. You will not get flustered. All right, so do follow this. You can start with anything that you enjoy reading. That's the tip. So I believe these amazing 5 tips will definitely help you a lot. And that's all from my side. Thank you so much. Bye bye. Keep studying.